他们在阴暗嘈杂、充斥着金属碎屑的工厂里工作。这些重型机器不是应该由大人来操作的吗？没有面罩，没有手套，没有任何防护措施。小小年纪就肩负养家的重担，孟加拉贫民窟的小孩似乎逃不出命运的枷锁。在南亚人的家庭，甚至是他们的生活当中，最不可或缺的就是这些铝锅。而铝锅正是出自数以万计的童工的双手才能够制造而成的。在南亚地区，铝制用品无所不在，一片薄薄的铝片可制成各式各样的铝锅、铝罐。有专门用来煮咖喱的、做饭的、煮水的、盛水的。由于铝制用品的需求量高，铝器工厂在孟加拉非常普遍，为当地人提供了就业的渠道。不过，这些工厂往往会聘请一批年龄不到14岁的童工，为他们任劳任怨。坎兰格察坐落在达卡南部布里甘加河中央，面积有2.9平方公里。这里曾经是达卡的垃圾处理厂，如今却是80万人的居所，更是达卡人口最密集的贫民窟。居民主要来自达卡以外的省份。一抵达坎兰格察，我先拜访在这里拥有5家铝锅厂的厂长 Barton， 以了解制作铝锅的过程。首先，工人会先用化学液体软化买回来的铝片。The smell here is very pungent. Chemical. 空气中充斥着浓浓的化学气味，实在难闻呛鼻。然而，大家似乎早已习以为常。之后，工人会把铝片放进冷水里头泡，麻干后放在太阳底下晒，整个过程完全没有防护措施。最后，工人利用车床和模具把铝片悬压成各种锅具，清洗晾干后就可以出货了。Barton 厂长的5家工厂总共聘用了大约100名员工，其中25名是童工。现年12岁的 Hakim 和哥哥一起在 Barton 的其中一家工厂工作，一做就做了4年，每天工作11个小时，1个星期做足6天，对工厂的营运了如指掌。他可以说是工厂里头的资深童工。当初 Hakim 还是通过哥哥的介绍来到这里打工的。
this your first job here? এটা আমার প্রথম চাকরি 4 বছর আগে। Have you thought about going to school? স্কুলে যেতে পারি না, বাবা বাসার টাকা নেই। So how much do you earn in a week? এই কাজ কইরা সপ্তাহে 500 টাকা পাই। টাকা দিয়া বাজার সদাই না খাই, চাইলে না ভাত খাই।在我的要求下 ，Hakim 示范给我看如何利用悬压技术制作铝锅盖。প্রথম মার্কেটে কিনে আনে, Okay. ওই যে আনছে, আনা পরে লাগাই। And then turn. Hand. Okay. পরে করব। আউট টাইম আউট পরে এই যে আমি গ্রিস লব, লাগাইব। Put on it. Okay. লাগাইয়া তারপরে এই এমনি করব। So like this. I আচ্ছা। put on it like that. আচ্ছা। Okay. পরে এই এমনি করব। কইরা পরে এমনি করতে হবে। And then dancing. 看着车床的主轴快速的转动，一片片铝片转眼间在 Hakim 的巧手下变成一个个锅盖。一个12岁的孩子，手艺似乎不亚于一般成人技师，我不得不对他肃然起敬。So you're dancing. Dancing. What? Okay. 这时，我们的拍摄开始引起骚动。Hakim 有些担心，我们也只好走出工作室。 How long have you been using the machine? 2 বছর ধরে মেশিনে আমি কাজ করি। 2 বছর। প্রথম আমার কারিগরদের ধরা দিয়েছে, তারপরে শিখেছি। Did any accidents happen? Do you cut yourself? আমার হাত কেটে গেছে 3 বার পাও কাটছে। Oh. So you just cut this? কাজ করতে যে Your head here also? কেটে গেছে, যে পরে আসছিলেন না। Does anybody around here wear protective masks or gear or any outfit? হাত মোজা ছাড়াই এভাবেই কাজ করে। Hakim 比一般的孩子更外向，非常的讨人喜欢。那我也看过他把铝锅戴在头上，所以我就尽管叫他铝锅小王子。我看到他徒手在操作这些重型机器的时候，吓了一跳，因为他没有戴口罩，也没有戴手套，那完全没有保护自己。这些重型机器不是应该由大人来操作的吗？怎么会是一个12岁的小孩这么精炼的在操作这些重型机器呢？ 况且我在工厂里头看到很多碎屑会溅起来，那我自己也会担心会射中我的眼睛。Hakim 如果继续在这边工作的话，不只是会中毒，非常有可能会受伤。那我感觉他几乎就是排着队拿号码，什么时候会轮到他？这个铝锅上面呢？ 有些部分凹进去了，那我们就要用一根木棍，慢慢的把它给敲出来、敲平了，让它的表面比较光滑一点。哦 no！ 我敲出更多的坑洞。哦 ，OK， 这样。原先看 Hakim 敲敲打打的似乎很容易，我应该胜任有余。没想到却大错特错。敲打铝制品要使用一定的力道和手法，不是3、2下功夫就能够上手的。我可是越帮越忙了。Wow! How do you do it? Oh, very good. Hakim 工作的这家铝锅厂有4个工作室。 每天可以出产大约280公斤的铝锅，20名全职员工当中就有10名是童工，所以这些锅子至少有1半是童工们在阴暗嘈杂、充斥着铝片碎屑的危险环境中打造出来的血汗之作。Is
Is it a common practice here to employ child workers? যে অধিকাংশ ফ্যাক্টরি অবস্থায় যেভাবে আমরা ওখানে আছি ঠিক ওভাবেই চলে সব কিছু। বড় লোক আর কি কাজ করতে সমস্যা হয়, আসে না, তাই জন্য ছোটো জনের কাজ করায়, যদি একটু বেতনটা একটু কম আসছে তাই আর কি করতে পারে।在这些老板眼中，员工的绝对服从是关键。他们看准了孩子比成人更容易驯服，所以宁可雇佣童工。而来自贫困家庭的孩子，自然而然就成为了他们廉价劳工的主要来源。午餐时间 ，Hakim 邀请我一起回家用餐。Hakim 的住家在离工厂不远的小巷子里，只需要步行10分钟。一路上，我感觉自己走进了一个被遗弃的世界。路面严重失修，四处都是垃圾，空气中还弥漫着一股恶臭。Hakim 的父母在一栋破旧楼房的3楼租了一个小单位。This is my house. This is your house? Okay. এখানে রান্না করি, হাঁড়ি পাতিল ভাত খেলে খাই। But I hear this bird, chick. Oh, it's here. Oh, it's a little chick. 哦。Hakim 的房子只有10平方米大，家里除了一些厨具、被单和日用品，什么都没有了。这层楼还住着另外11户人家，厨房和厕所都是大家共用的。这时 ，Hakim 的哥哥也回来了。Okay. What's your name? Your name? No. Hello. Danny. চলো খাবার খাই।房子狭小闷热的空间，加上外面邻居的喧闹声，让我感到窒息。我很难想象 Hakim 一家人是怎么在这样的环境下长期生活的。在他们兄弟俩吃饭的当儿，我发现阿龙的手指好像受了伤。现年16岁的阿龙，自10岁起就在铝锅厂工作。当年的小童工，如今已经是操作车床的技师。虽然工资增加了一些，但是工作环境和性质还是和6年前一样危险。মানে সিলভারের যে কাজ, এই কাজটা করতে গেলে এই জায়গাটাই বেশি কাটে, ঠিক আছে? এই জায়গাটা, এই আঙ্গুল, এই সাইড, ঠিক আছে? Oh, here also. Do you find a job dangerous? হ্যাঁ, এই কাজটা মানে অনেক একটা বিপজ্জনক কাজ, ঠিক আছে? কাজটা অনেক রিস্কের উপরে কাজ, অনেক রিস্ক। এটা করতে গেলে মনে হচ্ছে যে হাতও চলে যায়। আমার চোখের সামনে একজন লোক মারা গেছে, তারপর আবার লোক মারা গেছে, তারপর আবার হ্যান্ডা নাক ফাইটে গেছে। But you introduce Hakim to the job. হাকিম রে আমরা যত গরিব, টাকার অভাবে গেছি, ভাত তো খেতে হবে আমাদের, চাকরি বাকরি করে, তার জন্য কাজে যায় ঢুকছি। দেখা যেতে যে ওরে লেখাপড়ার ভিতরে দিলে আমাদের চলতে ফেলতে অনেক কষ্ট হয়, ভাত খেতে কষ্ট। Hakim 的父母来自一个距离达卡150公里的小村庄，父亲是一名散工，母亲则在塑料厂工作。他们17年前离开家乡，来到达卡讨生活。2个儿子都是在贫民窟里出世的。সুযোগ পেলে পাঠাই, যদি সুযোগ পাই আমি পাঠাবো স্কুলে, সমস্যা নেই। What can they do if they don't work at the aluminum factory? অন্য কাজ মনে করতে দেশে যে গৃহস্থী কাজ, আর কি কাজ করবো।
冬天的卡兰格察，天空被浓雾笼罩着，像披了纱的少女，有一种朦胧的美。然而，这层薄纱却遮盖不了残酷的现实。我从阿鲁姆身上看到了 Hakim 还有其他铝锅厂童工的未来。我已经能够想象，他们将年复一年的在那种危险的环境下工作，直到他们的身体无法承受为止。这让我想起 Hakim 捧在手里头的小小宠物鸡。这小鸡似乎比它的小主人还要幸福得多，因为它得到了 Hakim 的照料和爱护。但是，又有谁能够给予 Hakim 更多的关心和呵护呢？我来到孟加拉首都达卡最大的贫民窟坎兰格察的一家铝锅工厂，认识了童工 Hakim， 从中了解了当地铝锅厂童工的困境。今天我将拜访当地另一家工厂，这是一家罐头工厂，专门只做一种罐头，就是孟加拉人用来滋润头发的天鹅牌椰油罐。厂长努鲁亲自带领我去参观工厂。制作罐头可不简单，首先必须把镀漆的铁板分罐身、罐盖和罐底裁剪好，送去印刷。之后把罐身两边衔接起来，形成圆筒，再衔上罐底，最后以胶水巩固衔接的部分。等到椰油制造商装上了椰油之后，才能够封罐。另外，罐盖上面有个开口处，必须先打洞，再装上塑料盖。厂长说，工厂每天可以出产大约7000到8000个罐头。由于制作罐头的程序繁琐，工厂聘用了60名全职员工，当中有10多名是童工。童工们每个星期可赚取至少700塔卡，相当于13块新币。অ্যাকচুয়ালি আমার এখানে যেগুলো ওয়ার্কার আছে তাদের অ্যাকচুয়ালি আর্থিক অবস্থা অনেকই খারাপ। তো আমার মতে আমি ছোট কারিগর আমি রাখি না অনেক সময়। তো ওনার গার্জেনরা আসে আইসে বলে যে আমার তো আর্থিক অবস্থা খারাপ, আমি তো চলতে পারতেছি না, মানে ওরকমই কাজ লেভেলে রাখি যাতে ওরা টুকটাক কাজ টাজ। Hello. Hello. Who is Redoy? Redoy? Oh. Redoy? Hi, hello. Hi. আমার নাম Danny. আমার নাম হৃদয়। Redoy. হৃদয়। Redoy. Can you show me what you're doing? Yeah. Oh, so twist. 啊。这工作全人工，一群小孩坐在这里呢，就把这个塑胶盖给扭出来。我在工厂里和11岁的童工 Redoy 有了初步的接触。这几天我所碰到的孟加拉孩子都很热情，爱嬉闹，喜欢缠人。可是 Redoy 却特别安静听话，平静的脸上不经意地流露出一股不属于这年纪孩子的成熟。这不是 Redoy 的第一份工作，之前他曾经在气球厂待过一阵子，后来经朋友的介绍来到这里。今年是他在罐头厂工作的第3个年头。目前他每个星期可赚取900塔卡，相当于16块新币。What happens to all the income? জি আমার আম্মুর কাছে দিয়ে আছে। Have you been to school? গেছিলাম, ওয়ানে পড়তাম, আই পড়ছি। If you compare schooling and working here in the factory, which one do you prefer? আমার যাইতে ইচ্ছা করে স্কুলে। So, what does this machine do?
Yes, without cutting. For cutting.哦，OK，这就是那个罐头盖，把一块金属片，这锡片，把它放进机器之后呢，就盖下去。可是因为它完全没有戴手套，所以我蛮担心它的安全的。尽管厂长说，他工厂里头的童工所参与的都是一些简单又能胜任的工作，但是当赶货的时候，较有经验的童工还是必须帮忙操作重型机器。看着身材瘦小的 Redoy 小心翼翼地徒手操作这些比他还要大好几倍的裁剪机时，我的心也就跟着战战兢兢。因为只要他一不留神，很容易就会发生意外。让一个11岁的孩子做这么危险的工作，于心何忍呢？ আমার মেশিনের কাম করতে একটু ভয় লাগে কিন্তু মাঝে মাঝে একটু করি Has any accidents happened before? কার্টন নিতে গিয়া মাথা মাল বাইরে আসলো এদিক থেকে এদিকে Oh, so on your forehead. 过后，我跟随 Redoy 到罐头盖的后置部门。 What is this? 进来 Oh, to cut a hole. 啊，这是罐头盖，在上面呢要打一个洞，然后呢就可以放上刚才的那个塑料盖了。Can I try? I try. I'll do. Okay. So put it here, এই না like that, or like this. 哦 ，OK， 它是有一个特别的位置，就要把那个洞钉在上面那个样子的。So put it here, like that, and then swing. 我想不到这个罐头盖上面的洞是人工打出来的，我猜想他的右手臂应该很结实吧，都是重复着同样的一个动作。Okay, you check for me. Yeah? Okay? Pass? Good, good. Okay. 原本我觉得还挺轻松的，后来他要我大力的这样子挥动的时候呢，就感觉啊，背后肩膀就开始有点酸痛。罐头盖的后置部门除了我和 Redoy， 还有一大批女工。他们当中有些还携带小孩来上班。看着孩子在重型机器边活动，赤着脚在布满金属粉末的地上走动，真叫人捏把冷汗。这些孩子小小年纪就待在工厂里，以后会不会也顺理成章地成为这里的童工呢？我们现在就在河边，感觉非常的轻松写意，但是一进到工厂里头，完全是另外一回事。这间锡罐工厂里头，灯光很昏暗，空气非常的闷热，而且声音很吵杂。但这就是年纪小小的 Redoy 的工作环境。我觉得 Redoy 他非常的聪明，我们跟他相处一小段时间之后呢，他立刻就懂得怎么做。还知道这镜头的运作，还有整个拍摄的过程到底是怎么一回事情。我觉得他非常的内向，但这也可能是因为长期在这么一个闭塞的环境里头培育出来的一种个性。但是我可以感觉他非常的坚强。傍晚时分，我和 Redoy 约好放工后一起回家拜访他的家人。I'm Singapore Yes, Singapore. 原来 Redoy 是家中长子，有2个弟弟，一个念幼稚园，一个念1年级，还有一个小妹妹。 मेरा बोन Melbourne. Is it? 父亲是一名3轮车夫，而母亲则是一名帮佣。在等父亲回家吃晚饭的当儿，我和孩子们玩成一片。哎，喂，
Ridoy 在家里是完全放松的，没有了在工作时的紧绷模样，他的脸上多了浪漫的笑容。不久，父亲就回来了。 Hello. আমার নাম Danny. আমার নাম জিয়াউদ্দিন মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন 在 Ridoy 父亲的殷勤邀请下，我和他们一家人一起吃晚饭。从父亲和孩子们的互动当中，我看得出他很疼爱孩子。 আমি চারটা হ্যাঁ যেমনি পরিশ্রম করে হ্যাঁ আমার বাচ্চাটি আমি লালন পালন করতেছি বহু জায়গায় ঘুরছি যে কোনো কারখানার কোনো যে কোনো একটা ব্যবস্থা নেই করতে পারি কোনো জায়গায় কোনো ব্যবস্থা করতে পারিনি হ্যাঁ তাই আমার বাচ্চা আমি কাজে দিতে বাধ্য হয়েছি贫穷迫使身为大哥的 Ridoy 牺牲了自己的学业。 他到工厂打工帮补家用，同时也为弟弟妹妹换来了求学的机会。 কিন্তু আমি তো ওই বড় বাচ্চা পারি নাই দিতে কিন্তু ছোট দুইটা হ্যাঁ তিনজন আছে আমি শিক্ষিত করতে প্রস্তুত 你无法想象在 Karangacha 贫民窟的穷人家，他们的房屋状况有多糟。这间房子非常的小，大概只有15平方米大。刚才看到有小老鼠爬过电线，床上有蟑螂。为了让这空间更亮，爸爸还去跟邻居借灯。 这整个环境不只是闷热，可能也因为邻居住得非常靠近的关系，也非常的吵闹。门外一直会有人在讲话，大声的呐喊啊。我觉得这样子一个居住环境，如果给我们新加坡的孩子看到的话，肯定会吓得睡不着觉。然而，不管环境有多糟，这里始终是 Ridoy 放工之后的唯一避风港。 8, very good. 昨天我跟随罐头厂童工 Ridoy 一整天，从中体会到穷人家孩子的身不由己。他为了家人的生计、弟弟妹妹的前途而放弃了自己的学业，令我感慨不已。 孟加拉位于南亚次大陆东北部的三角洲平原上，人口将近1亿6千万人。在16世纪时，这里曾经是南亚人口最稠密、经济最发达的地区。后来，孟加拉受英国殖民统治，成为英属印度的一个省份。 1947年之后，孟加拉被分割成东西两区，西区归印度管辖，东区归巴基斯坦。1971年，东巴基斯坦宣布独立，印度为了要牵制巴基斯坦，因而支持孟加拉争取独立。印巴战争随后爆发。同年12月，印度军队攻占达卡。 隔年1月，孟加拉人民共和国正式成立。然而，经战火蹂躏的这片土地却已百孔千疮，人民的生活陷入水深火热之中。贫困迫使父母让年幼的孩子加入劳动队伍，帮忙维持家计。 在2006年，孟加拉政府将合法工作的最低年龄设定于14岁，但是这条劳工法令似乎没有什么效益。单单在贫民窟就有20%的孩子是童工。为了要了解当地政府是如何看待童工的课题，我特地拜访了卡兰格查区的议员塞杜。
How common is the practice of child labor employment in the whole of Bangladesh? বাংলাদেশে শিশু শ্রম এর আইন আছে। 18 বছরের নিচে কোনো শিশু কোনো কল কারখানায় মেল ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতে পারবে না। বাস্তবায়িত খুব কম হইতেছে, এটা দারিদ্রতার কারণে।由于卡兰格查是达卡最大的贫民窟，又有大约30多家工厂，因此童工的课题是个烫手山芋。যারা দেশ গ্রামে থাকতো তারা ওই কর্মের জন্য এখানে কামরাঙ্গীচড়ায় বসবাস করতেছে। তারা বাধ্য হয়ে তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে তারা বিভিন্ন কলকারখানা মেল ফ্যাক্টরিতে এদেরকে কাজ করাইতেছে।为了避免情况恶化，议员和他的下属会不时走访这一带的工厂，确保童工没有参与危险的工作。তুমি আসো, তোমার কি ইচ্ছে করে না লেখাপড়া করতে, স্কুলে যেতে? কিন্তু আমার দেশে ওই ফাদার আর মাদার যে ওরা ওয়ার্ক করবে, বাচ্চারা শিশু বাচ্চারা ওয়ার্ক করবে, প্রতি মান্থলি পয়সা আনবে, এই লোভ লালসার থেকে আমাদের গার্জেনদের বের হয়ে আসতে হবে। তাহলেই শ্রমটা, শিশু শ্রমটা বন্ধ হয়ে যাবে একেবারে।目前，非政府组织 Symbiosis 在卡兰科查为当地的孩子和少年开设了学前基础班，协助他们日后顺利进入正规学校就读。班上目前有50名学生，其中有好几位是前童工。বিভিন্ন কারখানায় যাই, দেখি যে ওখানে মানে কীরকম বাচ্চারা কাজ করে, যে সমস্ত বাচ্চারা পড়ালেখার জন্য আগ্রহী বা করতে চায় ওদের আমরা নিয়ে আসি।老师跟我说，孩子们都非常乐意上学，而制止他们上学的最大障碍却是父母。当地的父母认为，子女去工作赚钱比上学更实际、更有用。ওদের বাসায় যাই, বাবা মাকে বুঝাই যে এই বয়সে যদি কাজ করে, অল্প বয়সে কাজ করলে তো ওরা মানে বেশি দিন করতে পারবে না, অসুস্থ হয়ে যাবে, পড়াশোনা দরকার আছে। ওরা যদি একটু পড়াশোনা না করে তাহলে ওরা তো বুঝবে না, ওদের হিসাবটা ওরা বুঝে আনতে পারবে না, কীভাবে কাজ করবে, কীভাবে করবে। এই জন্য ওদের পড়াশোনাটা খুব দরকার। আমরা বলি যে কমসে কম অন্তত 5 ক্লাস। So, আমার নাম Andy. I come from Singapore. Yay. 根据联合国儿童基金会的报道，在孟加拉，弱势孩童如童工、贫困和残障儿童，他们就学的机会受到限制。就算他们得以上学，能完成小学课程的几率也只有55%。Eyes and ears. 老师透露，他班上的前童工年纪虽然比较大，但是他们的理解和学习能力却是很强的。আমার নাম শিমলা, আমার বয়স 14 বছর। ফুলের কাজ করতাম, কারখানায় ফুলের কাজ করতাম। আমার নাম রাজীব হোসেন, আমার বয়স 14 বছর। ওই যে এই হাড়ি পাতিলের দোকানে কাজ করতাম। How was your previous job like? Was it tough for you? হ্যাঁ, কঠিন ছিল। সারাক্ষণ বসে থাকতে হইতো, বানাইতে হইতো, হাত ব্যথাও করতো, অনেক কষ্ট হতো। যে ওখানে ওই কাজ করতে গিয়ে হাত কেটে গেছে, পা কেটে যায়, স্যাক লেগে পুড়ে যায়, তা আমার ওই হয়েছিল, স্যাক লেগেছে। How do you feel about attending school here? Do you like it? আমি এখানে স্কুলে আসার পরে পড়ালেখা করতে খুব ভালো লাগে। মানে কাজ তো ভালো লাগে না, স্কুলে আসলে পড়াশোনা করলে ভবিষ্যতে কিছু করতে পারবো।和学生们短暂接触之后，我发现他们其实都非常热爱学习，尤其是年纪较大的前童工。或许因为曾经打过工，知道做工的辛苦，所以更珍惜上学的机会。1, 2, 3 selfie, okay? 但愿他们都可以持续这股热忱，坚持完成学业。
OK，Thank you。我原本约好明天带在铝锅厂工作的 Hakim 和在罐头厂工作的 Ridoy 一起外出游玩，可是却突然收到了一则坏消息。我们收到消息 ，Hakim 的父亲告诉我们说 ，Hakim 从昨天晚上就没有回家，他已经失踪了大概10多个小时了。他的父亲到处去找他，但是还是联络不上他，不知道他跑到哪里去了。我们大家都非常的担心，因为不知道是不是出现了什么样的状况。其实我们是很不安的，因为不知道会不会因为我们拍摄节目的关系，使得他引起太多的注意。由于始终放心不下，我决定亲自到 Hakim 工作的铝锅厂走一趟，希望能够从 Hakim 的哥哥阿鲁姆那里了解事情的来龙去脉。I heard that Hakim has been missing for one whole day. Do you know where he is? হাকিম আমাদের দেশের বাড়িতে আছে গেছে রাত্রে ট্রেনে গেছে রাত্রে সকাল 9টা বাজে ফোন দিয়েছে আমার বকলে যে ভাই আমি বাড়িতে চলে এসেছি। 今天我们来到工厂之后，跟他的哥哥接触，才发现原来他已经跑回老乡去了。虽然让我们放下了心中大石，可是突然间心里面的感觉非常的复杂，有一点点生气。这孩子是不是太任性了？虽然他乐天，但是也不可以没有交代就跑回家，连他父亲也不知道。 铝锅厂童工 Hakim 不告而别，擅自回乡，让大家白担心一场。是因为受不了长时间的辛苦工作吗？还是因为有其他的因素促使他一走了之了呢？今天我按照原定计划到 Ridoy 家接他出游。看哥哥会拖弟弟的手哎。OK， 走吧。 由于 Hakim 临时出走，我决定让 Ridoy 的2个弟弟和我们同行。我准备带他们到游乐场去玩。OK，let's go。Have you been to the Future Park before? Do you want to be surprised? Yes. 这是 Ridoy 3兄弟第一次到打卡的新市区，这一切对他们来说都很新奇。我看到他们经过游乐场时的兴奋模样，心想今天他们一定会玩得很尽兴。不过在玩之前，我先带他们到商场的餐厅去祭5脏庙。And for you. OK, start. Cheers, cheers, cheers. Good. No? 我们才开动不久，商场的保安就突然间前来制止我们拍摄。Oh, okay. Oh, video? Okay. 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 Sorry. 在一阵混乱当中，随后而到的 Ridoy 的父亲怒气冲冲地把孩子们都带走了。后来从协调员那里，我才知道商场的工作人员竟然以鄙视的口吻侮辱了 Ridoy 一家，令父亲非常生气。 刚才在这间超级商场里头发生了蛮不愉快的事情的。我们把3个小孩带进去的时候，其实在入口处就已经开始有保安问很多的问题。为什么把这3个小孩带来这里？那他们是从哪里来的？来这里要做什么？其实我们大概可以感觉到，他们已经觉得穷人家的小孩是不属于这个地方的。也因为这3个小孩他们的感受很不好，好像 周围的其他人都用异样的眼光来看待他们，我没有办法想象的是，今时今日在这个国家、这个社会，竟然还有阶级之分。他们的阶级观念，使得这3个小孩今天没有办法好好的吃一顿，没有办法好好的玩一场。
商场事件之后 ，Ridoy 的父亲不允许我们和 Ridoy 有任何接触。那天起，我再也没有见到他们一家人了。我们今天早上6点多钟就开始出门，摸黑来到 Kamaran Gija， 我们要找 Hakim 的哥哥阿鲁，跟着他回到老乡去找 Hakim。和阿鲁会合之后，他带我到巴士车站搭车回乡。他们的故乡是一个名为坎达的小村庄，距离达卡有150公里。老房子里现在只剩下祖母看守着。巴士沿途在各个车站停停走走，行驶缓慢。时间1分1秒的过去，我们似乎还有一大段路要走。阿鲁姆告诉我，整个车程将耗时8个小时。我很庆幸一路上有他作伴，也不禁想起 Hakim 离家出走的那个晚上，他身上没带任何东西。一个身无分文的孩子，连夜赶路，那有多危险，多孤单。我们今天早上一大早出发，经过了8小时的车程之后，舟车劳顿，终于来到了这里，就是他们的家乡了。So Hakim at home this way. Oh here, okay. Hakim, Hakim, good to see you again. Why do you come back to this village? ভাবছি ভালো লাগছে এই জন্য আছি। How many times have you come back on your own? না না আমি আজকে প্রথমে এসেছি। Has it got to do with us filming you? আপনাদের জন্য না তো মন চাইছে তারপরে আসছি। Assalamualaikum. Salam. আমার দাদি দাদি。আমার নাম Danny。Hakim 的祖母育有6个子女，但是都不住在这里。House. Your house? House. Oh, here. Oh, no electricity. Cut. Cut. Just sleep here. টাকা পয়সা এই দেশে খুব মানে লেগে ঢাকা থাকে যে ব্যবসা বাণিজ্য এখানে করে। Do you prefer to stay in this village or in Dhaka? গ্রামে থাকতে ভালো লাগে। কারণ কি ঢাকায় সকল তো কোনো খেলাধুলা করুন যায় না, ভালো লাগে না ওদিকে, এদিকে ভালো লাগে আমার। এখানে ক্রিকেট খেলি, তারপর অনেক খেলাধুলা করি, ছোট পোলাপানের লোক অনেক খেলাধুলা করি। Hakim! Ready? Hakim! Hakim 告诉我，离开达卡的那个晚上，他搭巴士到火车站，然后转搭火车。沿途遇到了好心的车长，让他免费上车。兜兜转转之后，他终于在隔天早上回到了家乡。Ready? Hakim! 尽管最终仍必须回到达卡继续工作，Hakim 心中所向往的还是老家这辽阔的田园，自由干净的天空。心所牵系的始终是最初的原点。有个长辈提醒我：贫贱不能欺，威武不能屈。最让我感觉不安的就是这里的工厂老板认为聘请童工是理所当然的事情，因为他们便宜、好管理，而且对公司有利。他们的这种唯利是图的心态，也就造就了童工坎坷的命运。最让我困扰的是，高官认为应该由家长来负责任，是因为他们没有改变观念，不让孩子去读书。但是另外一方面，可能政府也没有采取任何的行动，
执行他们的法律责任。最让我欣慰的就是碰到了这2个小孩 ，Hakim 聪明机灵，他是可造之才，但是因为生长在这里，也许他的才华就被埋没了。Ridho 也非常的乖巧，跟兄弟还有妹妹相处呢，也相亲相爱。他必定会学会他父亲的一股武器，长大之后肯定是个好男人。这里的童工，这里再贫穷的人，他们的生命力还是非常强的，就像这条 Buriganga 河一样，再污浊也会不断的流动。